In this video, we will start the deterministic models. Deterministic models. So we define first the economic lot size models. क्या होते हैं? तो पहले हमें economic lot size models. So the inventory problem in which the demand is assumed to be fixed and completely predetermined are known as economic lot size problem. Economic lot size problem, or we can say that economic order quality. Economic order quality. तो दिस शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं EOQ, इकोनॉमिक लॉट साइज मॉडल्स और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी. तो द डिमांड इज फिक्स्ड और कंप्लीटली प्री डिटरमाइंड, मतलब फ्यूचरिस्टिक नहीं. नाउ so we start the model 1. So we discussed 6 models based on deterministic models. So that means first we start the model 1. अब पहला मॉडल हमारा क्या है कि पहला मॉडल स्टेटमेंट कहता है to find economic lot size when demand rate is uniform. आपका जो डिमांड रेट है वो यूनिफॉर्म है कि आपको 10 यूनिट रिक्वायर है तो 10 यूनिट ही आपको पर डे, तो 10 यूनिट ही आपको देनी है. तो डिमांड रेट इज यूनिफॉर्म एंड प्रोडक्शन रेट इज इनफाइनाइट. और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आपका वो कंटिन्यूस चल रहा है, तो दैट इज नॉट फिक्स्ड. प्रोडक्शन रेट इज इनफाइनाइट. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शॉर्टेज आर नॉट अलाउड. तो ये फर्स्ट मॉडल है जिसमें शॉर्टेज आर नॉट अलाउड. तो दिस मॉडल शॉर्टेज अलाउ नहीं करेगा, शॉर्टेज आर नॉट अलाउड. तो इकोनॉमिक लॉट साइज व्हेन डिमांड रेट इज यूनिफॉर्म, डिमांड रेट यूनिफॉर्म है, प्रोडक्शन रेट इनफाइनाइट है और शॉर्टेज आर नॉट अलाउड. So we will prove this model. So while proving this model, we draw a graph to understand the model. So that means first we take inventory. अगर आपके पास स्टॉक है तो स्टॉक के लिए फर्स्ट वी स्टार्ट द इन्वेंट्री. So this is our origin. So now this represent the inventory. So this represent the inventory. क्या आपने स्टॉक किया, कुछ स्टॉक किया. दिस कैन बी डिनोटेड एज स्मॉल क्यू, स्टॉक ऑफ गुड्स. नाउ अब हमें डिमांड आई, तो डिमांड आई, डिमांड भी हमारी यूनिफॉर्म है. डिमांड यूनिफॉर्म, जैसे आपने 100 आइटम स्टॉक किए, डिमांड आपकी है 5 आइटम्स की या 10 आइटम की पर डे. तो डिमांड यूनिफॉर्म रेट से आ रही है तो डिक्रीज होगा यूनिफॉर्मली. तो यूनिफॉर्मली जैसे डिक्रीज हो रहा है, तो सपोज वी आर हियर. तो दिस इज अवर डिमांड रेट आर. अब टाइम टी में ये हमारा स्टॉक क्लियर हो गया, बट हमारा प्रोडक्शन क्या है, इनफाइनाइट है. तो फिर हमने प्रोडक्शन हमारा कंटिन्यूस चल रहा है, तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन चल रहा है. तो नाउ सेम फिर आर डिमांड रेट से वी कंप्लीट दिस एंड देन फिर वी हैव द
same, production rate is infinite, then again, and so on. So this is the model. That means we are discussing model one. So we can set it this. So this is our stock of goods. So you can highlight by color. Okay. So now टाइम विल रिमेन सेम फॉर ईच. तो पहले के लिए हमने टाइम जो लिया टी, तो वो सेकंड के लिए भी टाइम टी ही रहेगा. यहाँ पर हमने सपोज कर लिया ए पॉइंट है कोई, तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होगा फिर वही टाइम टी होगा. यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कोई पॉइंट है सी, तो यहाँ से जो भी टाइम होगा वो भी टी रहेगा. तो एंड सो ऑन ये मूव करेगा. और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया दैट इज द पॉइंट बी. तो ओ ए बी यू कैन से दैट. एंड हियर A, so you can take it here as D, D, C, and again you can take another point. Okay, you can take as E or F, etc. So here we take as F and so on. So now the time T, and here we have R. So this is also remains same. This is our Q, this is our Q, and this is also our Q. So now we have the statements. इकोनॉमिक लॉट साइज मॉडल व्हेन डिमांड रेट यूनिफॉर्म है, प्रोडक्शन रेट इनफाइनाइट है, शॉर्टेज नॉट अलाउ है. तो अब हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं जब प्रूव करेंगे इसको. तो वी अज्यूम दैट लेट क्यू क्यू बी द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी. अब क्यू यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड पर प्रोडक्शन रन. अब एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस करी, फिर स्टार्ट किया, फिर क्यू, तो इनफाइनाइट है हमारा. पर प्रोडक्शन रन एट इंटरवल टी, और टी टाइम इंटरवल पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एट इंटरवल टी. So then total demand in time t. तो टोटल डिमांड क्या हो जाएगी इन टाइम टी में, दैट इज आर टी. तो आर टी, तो क्यू विद द क्वांटिटी प्रोड्यूस, so that will be Q is equal to RT. So Q equal to RT. So this is our equation number 1. So Q is the inventory, R is the demand rate, T be the time. So Q is equal to RT be the first equation. अब इसमें हम मेंशन करके चलेंगे कि सिंस शॉर्टेज इज नॉट अलाउड, शॉर्टेज आर नॉट अलाउड. जब शॉर्टेज अलाउ नहीं है तो होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी. सो द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंटरी. तो होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए इस इन्वेंटरी को. तो दिस इज अवर शेडेड एरिया. so we calculate the area of this. So this will be equal to area of triangle O A B. तो पहले का ही पार्ट का ट्रायंगल है, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं इनटू C1. C1 क्या होता है हमारा, होल्डिंग कॉस्ट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी का क्या एरिया होगा, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. तो 1/2 बेस, बेस इज टी और हाइट इज क्यू. तो वे 1/2 क्यू टी और इंटू C1. So this we can write down as 1/2 C1 QT. So this is our holding cost of inventory. So this is our equation number 2. अब सेटअप कॉस्ट भी डिनोटेड एज C3. तो सेटअप कॉस्ट क्या होती है C3. अब जब सेटअप कॉस्ट हो गई, होल्डिंग कॉस्ट हो गई, तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. सो द टोटल कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन, पर प्रोडक्शन रन.
ऑफ टाइम। अब टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल कॉस्ट हो गई होल्डिंग कॉस्ट 1/2 C1 into QT और प्लस सेटअप कॉस्ट, दैट इज C3। So this is our total cost per production run. Now we calculate the average total cost. तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट होगी, एवरेज टोटल कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन, पर प्रोडक्शन, तो दिस विल बी 1/2 C1, क्योंकि हर उसके लिए इंटरवल C3/टाइम T। तो दिस इज द टोटल कॉस्ट पर प्रोडक्शन डिवाइड बाई T। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 C1 into Q प्लस C3/T। अब Q की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्रॉम 1। तो Q है हमारा RT, तो Q=RT, तो T क्या हो जाएगा यहाँ पे, T=Q/R। तो T=Q/R, तो 1/2 C1Q और प्लस C3, और यहाँ पर हम Q/R पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C3R/Q। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो एवरेज कॉस्ट जिसको हम डिनोट करेंगे ए से, और वी मेक द फंक्शन ऑफ क्यू। नाउ तो दिस इज डिनोटेड एज ए क्यू, so this is denoted as AQ. Now we move to the minimum value of AQ. So for minimum value, of AQ, so we take a differentiation of AQ upon DQ, which is equal to 0, and a second derivative of AQ upon D square into Q should be पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो यूजिंग मैक्सिमम मिनिमम, तो मिनिमम कॉस्ट। तो देन वी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ DA/DQ। सो डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 3 को, तो इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस गिव्स अस, विद रेस्पेक्ट टू क्यू करना है तो 1/2 C1, और ये 1/Q है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/Q² इंटू C3R। और DA/DQ इसको पुट कर देते हैं 0 के इक्वल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, C3R/Q², ये किसके इक्वल हो जाएगा, C1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो जो Q² की वैल्यू आएगी, तो Q² की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो दिस वैल्यू जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2C3R/C1। तो 2C3R/C1, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी किसकी, Q स्टार। तो Q स्टार, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2C3R/C1। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था कि जो Q स्टार, T स्टार और हमारे Z स्टार होंगे, दैट आर द ऑप्टिमल वैल्यूज। तो दीज आर द ऑप्टिमल वैल्यूज। तो Q स्टार इज द ऑप्टिमल वैल्यू विच कैन बी कैलकुलेटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ 2C3R/C1। अब ये तो फर्स्ट उससे आ गया। अब सेकंड में हम क्या करना है कि सेकंड डेरिवेटिव चेक करना है कि D²AQ/DQ², ये पॉजिटिव आना चाहिए। सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू Q, तो ये फर्स्ट तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर Q का टर्म नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। अब ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/Q² का, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -2/Q3, 2/Q⁻³ तो दैट मीन्स ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, द 2/Q⁻³ इंटू C3R। तो ये जो कॉस्ट होगी दिस विल बी पॉजिटिव, तो डिमांड रेट भी पॉजिटिव होगा, सेटअप कॉस्ट भी, क्यू भी, प्रोडक्शन। तो नाउ दिस विल बी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव होगी तो अब वी नो, अब कैलकुलेट करते हैं हम टाइम टी ऑप्टिमल। तो टाइम टी क्या होगा, तो वी नो Q=RT। तो Q=RT होता है, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से T विल बी Q/R। तो Q क्या है हमारा, Q है, हमने कैलकुलेट किया है स्क्वायर रूट ऑफ 2C3R/C1 और अपॉन R। तो जब सिंपलीफाई करेंगे तो दिस गिव्स अस स्क्वायर रूट ऑफ 2C3R, तो ये क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर इनसाइड। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, T विल बी
2C3 upon C1R. So this is the optimal value of T. So this is the optimal value of T. So we remember these values, Q star, T star, then we obtain the value of C. So minimum cost. So C minimum. So that is the minimum cost. So we can calculate as 1/2. So minimum cost हमें कहाँ से obtain करनी है? So 1/2 C1. So 2C3R upon C1 plus C3R upon 2C3R upon C1. So we put the value of Q. So we simplify this. So we write down as 2C3R into C1 square. So we take inside. So that gives us 4C1 and plus we write down as C1 C3 square into that is R upon 2C3R. So we simplify this to C1 C3R upon 2 plus here also C1 C3R upon 2. So this can be written as twice of C1 C3R upon 2. So we take 2 inside in the square root. So gives us 4C1 C3R upon 2. So this gives us square root of 2C1 C3R. So this is the value of C minimum. This is the value of C minimum. So minimum cost. So now we can say that इसको हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा जो C1 और C3 है, if C1 and C3 are constant, तो सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट अगर आपकी कांस्टेंट हो जाए तो देन द मिनिमम जो मिनिमम कॉस्ट होगी, मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट टाइम, जो मिनिमम कॉस्ट होगी पर यूनिट टाइम इज proportional to the square root of the demand rate. Square root of the demand, the square root of demand rate. R क्या है हमारा demand rate. So this is our model 1. Thank you.